इल विल डाल रहते हैं, इल स्पिरिट ऑफ इल विल, वैमनस्य निर्माण करणारा and all दुरात्मा. evil of men of Shechem God returned to their own heads. And then came on them the curse of Jotham. जोथम ने बोला था अगर तुम अच्छे रहेगी उससे तो कोई बात नहीं, बट नहीं तो वो ये ट्री जैसा होगा, ब्राम्बेल ट्री, फायर. देन द जज ऑफ टोला, जज ऑफ जायर, इजराइल सिंस. इजराइल. उसके बाद जेफ्ता इज कॉल्ड. गिलियड, गिलियड कोई और है. Now Jephthah the Gileadite was mighty man of valor, and he was son of a harlot. And Gilead begot Jephthah. Gilead's wife bore sons, and his wife's sons grew up and drove out Jephthah out, and said to him, You shall have. अच्छा, तो इसकी मम्मी एक हार्लट थी, तो उसको मम्मी नहीं है, तो जस्ट बॉर्न. उसकी मम्मी उसके पापा के वाइफ नहीं थी. तो गिलियाड को क्या हो गया, ही वॉज बिगॉटन, मतलब उसको बड़ा किया. गिलियाड, गिलियाड एक इंसान है, उसने उसको बड़ा किया जेफ्ता को. तो व्हाट हैपेंड इज दैट गिलियाड्स वाइफ हैड सन्स. नाउ दे ग्रो अप. अभी ये ग्रो अप होने के बाद ये सब भाई भाई, ये भाई नहीं है जेफ्ता उनका, मतलब असली भाई नहीं है. तो उसको बोलते निकल इधर से, यू हैव नो इनहेरिटेंस विद अस, फॉर यू आर सन ऑफ अनदर वुमेन. हमारे पापा सेम है, तेरी मम्मी किधर है, नहीं है, निकल हमें से. सो जेफ्ता फ्लेड फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड ड्वेल्ट इन द लैंड ऑफ टोब, एंड वर्थलेस men banded together with Jephthah and went out raiding with him. Now it came to pass after a time that the people of Ammon made a war against Israel. So it was when all the people of Ammon made a war against Israel that the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Then they said to Jephthah, Come, be our commander, that we may fight against the man of Ammon. बोलता रहेगा पहले मुझे भगाया, अभी तुम्हें मेरी गरज पड़ी तो मेरे पास आए. Okay, no problem. So Jephthah said to the elders of Gilead, Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come now when you are in distress? अभी बराबर याद आया हमें, तभी तो मुझे बोला तू son of another woman. And elders of Gilead said to Jephthah, That is why we have turned again to you, now that you may go with us and fight against the people of Ammon and be our head over all the inhabitants of Gilead. So Jephthah said to the elders of Gilead, If you take me back home to fight against the people of Ammon, and the Lord delivers them, shall I be your head? मैं आने के बाद मैं जीता, when the Lord delivers, मैं तुम्हारा हेड बनूंगा. So elders of Gilead said to Jephthah, The Lord will be witness between you and me if we do not do according to our words. Now they made him head and commander. Okay, and then Jephthah spoke all the words before the Lord in Mizpah. Now Jephthah judges. Okay. 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 इधर देखो क्या हो गया उसके और उसकी डॉटर में, जेफ्ता और उसकी डॉटर. देखो ना, when Jephthah came to his house at Mizpah, there was his daughter coming out to meet him with timbrel and dancing. This is very sad story. तो In which word this is? 12:34. 12:34. हाँ. No, 11:34 मिनट. हाँ, 11:34 में वो बोल रहा है कि मेरी डॉटर मेरे पास नाचते आई, timbrel and dancing. She was his only daughter, only child. Besides her, he had no